मसनूई ज़हानत ने इंसान की तमाम उंगलियों के निशानात के मुनफरिद होने के ख्याल को गलत साबित कर दिया। न्यूयॉर्क, एक मसनूई ज़हानत के सिस्टम ने इंसान की तमाम उंगलियों के निशानात के मुनफरिद होने के ख्याल को गलत साबित कर दिया। तवील अरसे से माने जाने वाले इस ख्याल के मुताबिक अगर किसी मुजरिम ने जाए वारदात पर हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली के निशान छोड़े हैं तो दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता। इस ख्याल को गलत साबित करने में कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने यह जानने की कोशिश की कि आया मसनूई ज़हानत एक ही शख्स के बज़ाहिर बिल्कुल मुख्तलिफ दिखने वाले उंगलियों के निशानात के दरमियान किसी ताल्लुक़ की निशानदही कर सकती है। इस ख्याल को परखने के लिए गैब गो नामी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने एक कंप्यूटर को 60,000 उंगलियों के निशानात जोड़ों की सूरत में पेश किए। कुछ केसेस में ये निशानात किसी इंसान के हाथों की दो मुख्तलिफ उंगलियों के थे, जबकि कुछ मामलात में ये निशानात दूसरे लोगों के थे। वक्त के साथ कंप्यूटर ने उन खास नुकूश की निशानदही की जो बज़ाहिर तो दो मुख्तलिफ उंगलियों के निशान थे लेकिन एक ही हाथ के थे। ये निशानदही एक ऐसी चीज़ थी जो पहले कभी नहीं की गई थी। जर्नल साइंस एडवांसेस में शाये होने वाली तहक़ीक़ में गैब गो और उनके साथियों का कहना था, हमारी मरकज़ी दरियाफ्त एक ही शख्स की मुख्तलिफ उंगलियों के निशानात के आपस में मुशाबहत रखने के मुतालिक मालूम होना है। ये नताइज उंगलियों के तमाम कम्बिनेशंस के लिए यकसां हैं, चाहे ये उंगलियां एक ही शख्स के मुख्तलिफ हाथों की ही क्यों ना हों। तहक़ीक़ के नताइज इब्तिदाई तौर पर एक जर्नल ने मुस्तरद कर दिए थे। जर्नल के एडिटर का कहना था कि ये बात अच्छी तरह जानी जाती है कि हर उंगली का निशान मुख्तलिफ होता है, इसलिए उंगलियों के निशानात के दरमियान मुशाबहत की निशानदही मुमकिन नहीं, चाहे वो निशानात एक शख्स के हाथ से क्यों ना आए हों। How unique are fingerprints? This question has been the foundation of forensic science for over a century, leading us to believe that every single fingerprint is as unique as the individual it belongs to. But what if this long-held belief was proven wrong? What if an artificial intelligence system could discern a connection between seemingly distinct fingerprints? This is precisely the story of a revolutionary discovery made by an AI system, developed by a graduate student from Columbia University. This ingenious system managed to debunk the myth of the uniqueness of fingerprints. For ages it was believed that if a perpetrator left the prints of a thumb and index finger at a crime scene, there could be no correlation between the two. However, this theory was put to the test by an engineering graduate named Gabe Guo. Guo presented the AI system with 60,000 fingerprints, some belonging to different fingers of the same individual, others from different individuals. As time passed, the computer began to identify specific patterns. These patterns were seemingly from different fingers, but belonged to the same hand. This identification was something never accomplished before. In a study published in the journal Science Advances, Guo and his colleagues revealed their central finding. There is a similarity between the prints of different fingers of the same individual. This result was consistent for all combinations of fingers, regardless of whether they belong to the same or different hands of the person. This groundbreaking research was initially rejected by a journal editor who held the belief that every fingerprint is unique, and therefore, it's impossible for there to be a similarity between fingerprints, even if they come from the same hand of a person. However, the AI system proved this misconception wrong, demonstrating that technology can indeed identify a connection between different fingerprints of the same individual. This finding has significant implications for forensic science, potentially revolutionizing how we understand and use fingerprints. In summary, an AI system has debunked the long-held belief of the uniqueness of fingerprints, proving that there can be a correlation between different fingerprints of the same individual. This discovery challenges the foundations of forensic science and opens new avenues for technological advancements in the field.